जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामृतं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome everyone for Saturday morning class. I appreciate your enthusiasm despite of being so cold. इतना ठंड में भी आप लोग उठ के आए हैं. We need to reduce the volume a little bit. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ठीक है. हरे कृष्ण. Where is Anirudh? Anirudh. He didn't come today. So I appreciate your enthusiasm. इतने ठंड में भी आप उठ के आए हैं. I heard it is 3 degrees Celsius, 4 degrees Celsius temperature in north of India, Delhi, Vrindavan. Correct? How many for meeting for the first time? पहली बार हम मिल रहे हैं. Okay, your name, Prabhu? Siddharth, Ashish, Kalpesh, Shreyas, Arvind. Okay, Sanket. Good. Prabhat. So we'll continue reading from Srimad Bhagavad Gita. Before that, congratulations. Lord Ram's temple is ready and about to be ready, and Pran Pratishtha is happening after 2 days. It is momentous incident. Srila Prabhupada, when he was preaching, Prabhupada said that the preaching will happen in the West through more of a book distribution. In India, preaching will happen mostly by temple construction in Harinam Sankirtan. I was reading this beautiful book, Dancing White Elephants. This is done by His Holiness Giriraj Swami Maharaj, Srila Prabhupada's leading disciple. This is about Srila Prabhupada's travel in India from August 1970 till March 1972. And yesterday I started reading this book. The first line is so nice. It was so confidence giving to hear this first line. Chapter 1, the first line is, I'll read out exactly as it is. In August 1970, Srila Prabhupada announced that he was going to India. Till now, Prabhupada is preached in America. In 1970 August, Prabhupada is coming to India. When he was asked why, when his Guru Maharaj has ordered him to preach in the West,
ऑल आर ओके विथ इंग्लिश? हिंदी मिक्स करना थोड़ा, ओके। श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु का आदेश था कि आप अमेरिका में जाके प्रचार करो, इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। तो किसी ने पूछा, जब प्रभुपाद जी 1970 में भारत आ रहे थे, किसी ने पूछा कि आपके गुरु महाराज ने तो आपको आदेश दिया था कि पश्चिम देश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करो, आप भारत में क्यों जा रहे हो वापस? तब प्रभुपाद जी ने कहा, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अमेरिका और यूरोप में प्रचार कर दिया है। स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूरोप एंड अमेरिका, नाउ आई वांट टू रिवाइव स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ इंडिया। So this is first line. It was so confidence giving for me. If you want to really please Prabhupada book distribution, especially now, it's Prabhupada desire to revive Indian culture. So Prabhupada was trying. Prabhupada said that Indians are not taking up seriously, but the seed is already there in the heart. सबके हृदय में कुछ न कुछ भावनाएं हैं भगवान के लिए. And that is why when the inauguration of or Pran Pratishtha is happening of Ram Mandir, and it is just announced by the Prime Minister Modi ji, then everywhere there is so many things coming up, right? People have, I saw from Gujarat somebody has sent a big incense stick, अगरबत्ती 108 फीट लंबा अगरबत्ती, इतना बड़ा ट्रक में उसको स्टैंड पे रखा गया है, 108 फीट लंबा अगरबत्ती. And then from somewhere from Nepal the gold has been given, and from Hyderabad the doors have gone. Some people started walking from different cities to Ayodhya of different faith, non-Hindu faith. People started walking from different cities to Ayodhya because being human being, being part and parcel of Krishna, this innate loving affection for Krishna is already there in the heart. सबके हृदय में है, but वो बस हम भूल गए हैं, rather भुला दिया गया है हमें by the propaganda and so much of canvassing of technology. तो हमें भुला दिया गया है कि भगवान है और हम भगवान की सेवा करने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं. But now again, as soon as just like the seed is there in the ground and water is given, and so sepals start sprouting. See, जब last time हम आए थे ये सब बहुत छोटा छोटा था, but as the water is given, it starts sprouting and then start growing. Similarly, the devotional affection for Krishna, emotions for Krishna is there in the heart. भगवान के लिए भावना हमारे हृदय में है, but वो भी सुसुप्त अवस्था में है. It is in dormant stage. अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद गिराहि इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदः. अतः श्री कृष्ण नामादि, when we do service to Krishna with the help of starting from his holy names, tongue, sevoन्मुखे जीवादो, starting from the tongue, when we do service to Krishna, then what happens? Swayam eva suratyadaha. The devotion for Krishna, the loving affection for Krishna, which is in the heart already, but in dormant stage right now, स्वयं एव स्फुरत्यदः, वो स्फुरित हो जाती है भक्ति. So very easy. Just similarly, just little bit information is given. Okay, Lord Ram's Pran Pratishtha is happening, and everybody started joyously enjoying. And of course, there are some people who will not do that, happily enjoying. But then, what to do? Srila Prabhupada said that the Sankirtan movement is established by Sri Chaitanya Mahaprabhu. A time will come when everybody will float in the ecstasy of Sankirtan. Sorry, everybody will drown in the ecstasy of Sankirtan. सब संकीर्तन के आनंद में डूब जाएंगे. Prabhupada says only Mayavadis will float on the surface. वो आनंद में डूब नहीं पाएंगे. They don't accept Krishna as the Supreme Lord. They don't accept personal form of Krishna. And similarly, the wave is going on of Lord Ram's arrival. Everybody will drown in Sankirtan. Our devotees also have gone. ISKCON is distributing 3 lakhs free Bhagavad Gitas in Ayodhya. Every day more than 10,000 meals freely given. So momentous occasion. So if one has devotion and he applies the method rightly, then he can feel the joy. He can drown himself in bhakti. But if he doesn't, then he will float on the surface. There are people in India also who will float. So nonetheless, this is all happening because Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement has to spread for next 10,000 years. श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन 10,000 वर्ष के लिए आगे बढ़ने वाला है. संकीर्तन हर गांव शहर में जाएगा. पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय विमूढ़ नाम. जितने भी ग्राम और नगर है पूरे पृथ्वी पर, सब ग्राम और नगर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को पहुंचा दिया जाएगा. अंदर पहुंचेगा, वो भले ही कोई पहुंचाए ना पहुंचाए, संकीर्तन पहुंचेगा. और वो हो रहा है
उसी को facilitate करने के लिए all these events are happening. Such uh, righteous prime minister being elected, and then Ram Mandir opening. You see, pandemic, COVID pandemic, people became more spiritual in COVID pandemic, right? There was so much time, so we could do online programs. So many things happened. So everything is happening just to further Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement for next 10,000 years. Srila Prabhupada wrote in this books in English. One devotee analyzes nicely and he says that why did Britishers go around the world and establish their empire? Why? So that English becomes a common language around the world. And Prabhupada writes books in just one language and then that is accepted by everybody in the entire world. It doesn't have to write so many languages. English becomes a commonly accepted language. So that way everything is happening just to facilitate and propagate Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement for next 10,000 years. This is one of such incident in the series. So we'll continue reading from Srimad Bhagavad Gita. 3.27 is done, right? प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते. Someone remember something? First thing to be influence is the mind intelligence, and then the intelligence is bewildered, then the false ego comes. Something more? 3.24 में 23 and 24 में हमने देखा था कि विष्णु भगवान है, उनको उनकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रहे जस्ट टू सेट एन एग्जांपल. Yes. Good. Something more? Good. Something more? गुड. एक हफ्ते के बाद भी आपको याद है. वेरी गुड. 3 दिन के बाद वेडनेसडे, Saturday. Good. 1 week. Today we'll continue from 28. So last shloka was very important. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankar vimudhatma karta aham iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Please repeat. Tattvavittu mahabaho गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. Somebody wants to recite? तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. Word for word meaning. So we will do word for word meaning and recitation also for text 28. 29th onwards we will just recite. Tattvavid, the knower of the absolute truth. Tu, but. Mahabaho, O mighty armed one. Gunakarma, of works under material influence. Vibhagayoho, differences. Gunaha, senses. Guneshu, in sense gratification. Vartante, are being engaged. Iti, thus. Matva, thinking. Na, never. Sajjate, becomes attached.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitful results. The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge. And he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In this pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in the three different features, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan, and the Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavit. For he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. So, last shloka mentions that those who are foolish, they do not understand that everything is done by material nature. They think that everything is done by me. I am the doer, though it is done by somebody else. It is like this, an example. If I am sitting in the bus, if I push the forward seat ahead and thinks that if I think that bus is moving ahead because I am pushing it, आगे वाला सीट को धक्का मार के सोचूंगा कि मैं धक्का मारूं इसलिए बस आगे जा रही है एंड थोड़ी देर के बाद सोचूंगा कि ठीक है अभी बस को पीछे घुमाऊंगा मैं पीछे घूम जाता हूँ और फिर पीछे वाली सीट पे ऐसे धक्का मारता हूँ तो क्या होगा बस आगे ही जाएगी बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा गुस्से हो जाऊंगा बस पीछे क्यों नहीं जा रही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वेल बस की जो गति है वो मेरे प्रयास पर मेरे प्रयत्न के ऊपर निर्भर नहीं है it is anyhow happening because of the petrol engine mechanism because of the driver who is taking it in different directions similarly a person foolishly thinks that I am pushing I am doing this activity that is what is happening मैं कर रहा हूँ इसलिए ये सब हो रहा है but actually nothing happens by our efforts. It's done by Krishna's sanction and material nature, the modes of material nature. They execute things. It is just like this. I desire, meri ichha hui. Then Krishna sees, analyzes my desire. And if Krishna grants it, then Krishna grants and the order is given for execution to the material nature. The material nature, Prakriti, to the modes of material nature, Prakriti ke gunon ke dwara, all the arrangement is done. And then executed. Make sense? But we foolishly think that I am doing it. Now that is about the foolish person. Today's sloka talks about the one who is in knowledge. जो व्यक्ति ज्ञान में है, who doesn't think foolishly. उनके बारे में ये श्लोक बताया गया है आज का. Tattvavit means tattva means truth, knowledge, and vit means one who knows it. Mahabaho, O Arjuna. Tattvavit to Mahabaho. Mahabaho means who has a big arms. Mahabaho. Guna karma vibhagayoho. Guna karma of works under material influence. Guna karma. This shloka, this word comes before also. Remember? Oh sorry, इसके बाद आएगा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः. Guna karma vibhagayoho. Vidhi akartaram avyam. Good. Guna guneshu vartanta iti matva na sajate. So he knows everything is happening because of the material modes of nature which are also being handled by material modes of nature. For example, eyes are made up of material modes of nature: earth, water, fire, air, and ether. These are elements, and then modes control eyes. Now, when do we get happiness? When I see something beautiful, then we get happiness.
So three things are involved here. Eyes are involved, that is sense. The objects of the sense, that is also involved. Sense object. When these two things come in touch, then there is some perception of happiness. ये concept कहाँ आता है और भगवत में? Very good. दुःखयोनय एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. भगवत गीता सेकंड चैप्टर में भी आता है. स्पर्श कांटेक्ट, you remember? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनो इनका सांस्थितिक भारत. So what is that sparsh? That sparsh mentioned is this one. The senses coming in touch with the sense object. That touch. That gives a kind of perception of happiness. Now both is interaction. The senses, which are also made up of modes. Senses are made up of modes. Sense object is also made up of modes. Right? Just like nice flower. Flower is made up of modes of nature. We need the slides, I think, in terms of that. The senses, eyes are made up of modes, elements. The flower is also made up of elements. And there is contact between the two. How is that activity of sparsh happening? By modes of nature. Right? I come in Rajoguna, I want to enjoy something, I want to, this nice flower controllership, I will enjoy this flower, take a smell it. I will control people. What is that happening? Modes are overpowering me. Make sense? थोड़ा complicated है, थोड़ा concept है, but it will be very helpful. Eyes are made up of modes. The object of sense is also made up of modes of nature. And the activity of the senses coming in contact with the objects is also happening by the control of modes of nature. Because Rajoguna takes over. Rajoguna, material modes. That is what is mentioned here. Guna guneshu vartanta. It's just happening. Everything is happening just by the interaction of modes. And iti matva na sajjati. One who knows this, जिसको ये पता है, इति मत्वा न सज्जते, he is not entangled by karmic reactions. So it's very difficult. Philosophically, it's very easy to understand, but when it comes in practical application, it's very difficult. And when somebody knows this, he will be aloof from material modes. Karmic reaction भी नहीं लगेंगे, and he'll be aloof. An example can be Srila Prabhupada. All the time, every moment, Srila Prabhupada was aloof from modes of nature. I mean, there is no doubt, any moment of his life, if you observe, Prabhupada was in full knowledge, he was in full cognizance of being, everything is happening by modes of nature. I am servant of Krishna and I am supposed to serve Krishna. Let's take an example. When we are influenced, let's say when nice gulab jamun comes in front, then do we remember all this philosophy? The tongue is made up of modes, the gulab jamun also is made up of modes, and the activity of tasting also is happening because of the modes of nature. We don't remember this. We know this is prasad, but still we forget it. Spiritual activity. What to speak of spiritual activity? Then what to speak of the material activity? Material enjoyment. Will we remember philosophy? Because we are so strongly overpowered by modes of nature. करोड़ों जन्मों से we have enjoyed, and वो आदत अभी भी है, कुत्ते की पूंछ अभी भी वैसे ही है. Unfortunate, helpless situation, what to do? But that is fact. ये सत्य है. Let's take an example. This is a very gross example. And yesterday I was remembering in Guru Puja, I was just thinking, this thought came to my mind in Guru Puja. It's going to सबको कहीं ना कहीं एक चांस मिला होगा कि आप स्टेज पे गए हैं, करेक्ट, और लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई हैं. सबको चांस मिला होगा कुछ ना कुछ, करेक्ट? यस, कोई है जिसको ऐसा चांस नहीं मिला? आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तालियां बजती हैं, करेक्ट? कैसा लगता है हमें? हाँ, ओवरवेल्म. हम सब भूल जाते हैं कितने लोग बैठे हैं, और जब ताली बजने के बाद हम स्टेज से उतरते हैं तो आसपास कौन है दिखता ही नहीं है कुछ, एकदम मतलब कुछ अलग लेवल पे होते हैं. Because of ego, modes of nature controlling us just for 1 minute. And then good if you know philosophy, otherwise you'll think that, oh yeah, I did this match, मैंने जीता, I was the captain. भले ही सारे मैक्सिमम कैच उसने ही छोड़े होंगे but I was the captain. Controllership mentality आ जाता है. So the point is, when something comes like this, honor or dishonor, or when somebody is insulted, when we are insulted, we forget everything else. We think that why only me? But I was just thinking, when we are clapped for 1 minute, हम हवा में उड़ जाते हैं, correct? 7th sky पे. But I was just thinking, when Srila Prabhupada is sitting there, and every day Prabhupada is receiving Guru Puja,
and hundreds of devotees are dancing Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. No effect. Prabhupada is so simple, so normal. And how? देखने से पता नहीं चलेगा क्या हुआ. I'll just share an incident. Once in Mayapur, there was one devotee who got some infection in the foot. पैर में कुछ infection हो गया, घाव लगने के कारण. And then Prabhupada, this was not during Guru Puja, 2 days before. And Srila Prabhupada asked him what happened. He got injured. Do you have some medicine? So Prabhupada told one devotee, arrange medicines for him. And then next day, Prabhupada again asked him in the room, how's your foot now? How's your health? And then the devotee says it's improving. Third day, Prabhupada was sitting in Guru Puja and he was receiving Guru Puja. It's a big thing. I mean, somebody, hundreds of people, not only Indians, Americans and Europeans are dancing on your Jai Jaikar. It's too much. It's too much to accept. And there, Srila Prabhupada sees that devotee and calls him, how is your foot? Aapka pair kaisa hai? Do you receive medicine today? So Prabhupada is not thinking about that everybody is dancing for me. He's thinking about somebody's health is not good. So it's little detail to understand. It takes some thought process to understand. But this is called being aloof from whatever is happening around. Prabhupada knows that everything is happening, all the respect is for Guru Parampara, not for me. Of course, that is even higher level. But at the gross level, we can understand this. That whatever is happening, the material happiness, it is not because of the truth. It is just because of the modes coming in contact with modes, which are the interaction is also happening by modes. And when we understand this, then we'll not get bothered by small things happening in the life. कुछ हो गया, problem, I mean so much problem, किसी ने कुछ बोल दिया. I mean, the smallest thing people get disturbed, right? And smallest thing people get elated also. पूरी दुनिया को दिखाएंगे. But we will not get affected if we know this philosophy, this fact. So that's what Bhagavad Gita teaches us, being aloof from the material modes of nature. Tattavittu mahabahu gunakarma vibhagayo gunaguneshu vartanta iti matva na sajjate. Srila Prabhupada writes in the purport, he knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or the other he is entrapped in the material conception of life. We are actually part and parcel of Krishna. हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं. But परिस्थिति के कारण, because of situation, we have been entrapped. पकड़ लिया गया है हमें माया ने. Or rather, we have agreed to be entrapped by material nature, Maya. And then, because of that, all these problems are coming. But if you understand this, Jiva Krishna Das, A Vishwash ko le tu aur dukho nahi. If you just agree that I am servant of Krishna, and my real constitutional position is to serve Krishna, you'll be so happy. There is no anxiety. Servants are the most happy people in the world. You will not believe this. आप सुन के ऐसे कैसे होता है? The servants are the most happy people in the world. ऑफिस में कोई ऑफिस में ऑब्जर्व करो, कोई प्यून है, प्यून को बोल दिया चेयर पे थोड़ा कपड़ा मार दो, साफ कर दो, वो कपड़ा लेके आएगा, साफ कर, काम खत्म उसका, एंग्जाइटी खत्म, जॉब इज डन, खत्म. पर जो ऑफिस में जो आई डोंट नो सुपरवाइजर मान लीजिए, अगर बॉस ने बोला कि ये साफ करवा देना, तो सुपरवाइजर को बार बार टेंशन रहेगा, वो वर्कर को बोला साफ किया है कि नहीं किया होगा, वापस जाके चेक करना पड़ेगा. उसके ऊपर के लेवल पे बॉस को इवन ज्यादा टेंशन है, पूरी दुनिया का टेंशन लेके बैठा है. The more we go in the higher in the respect, controllership, the more suffering we invite. But if you understand that we are servant of Krishna, it's so happy position, no anxiety. Even if we don't do anything, Krishna still will take care of us, and Krishna guarantees that. So we can remain aloof. Our original position is eternal servant of Krishna, and if we remember this, we will be so happy. If we don't remember this, we will think that I am the controller. वो बस वाला example. सीट को हम पीछे पुश करेंगे, क्या बस पीछे जाएगी? नहीं, आगे ही जाएगी. Then we'll get frustrated, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है. But if we understand that I am not the one, it's the driver actually, then we'll be fine. Okay, मैं आगे पुश कर रहा हूँ और पीछे को, it doesn't matter. ड्राइवर आगे ले जाना चाहेगा तो आगे जाएगी, बस ड्राइवर पीछे ले जाना चाहेगा पीछे जाएगी. I am just a passenger sitting there. So we understand, कृष्णा की इच्छा होगी तो आगे लेके जाएंगे, तो पीछे लेके जाएंगे. And the beauty of Bhakti Yoga is one can control Krishna also. Like I was hearing one Prabhupada's class, Prabhupada says that Mayavadis think that they are God. You know what is Mayavad philosophy?
मायावती फिलोसफी पता है? बताइए. यस. हम ब्रह्मास्मि, वो सोचता है कि मैं ही भगवान बन गया हूँ, हम सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, ये प्लांट्स भी भगवान है, सब भगवान है. नमो नारायण. एक बार यूं हुआ. So how Mayavadi philosophers, yesterday I was reading in sixth chapter of Bhagavad Gita. Prabhupada says that the Mayavadis, they think that I am God, but they cannot control things as God, and they just for years together, for lifetimes together, they keep speculating. But devotees of Krishna, they are happy dancing in kirtan, eating nice prasadam, and just by eating and dancing, they go back to Godhead. They achieve the perfection of life. So it so happened once. There are two incidents in connection to Mayavadi. Because in West there is nothing called Mayavad philosophy. I mean, people don't have clarity of what it is. But in India, people are stubborn. Okay, यही है हमारा philosophy सही है. तो एक बार क्या हुआ था? श्रील प्रभुपाद जी गए थे प्रयागराज, कुंभ मेला में गए, अर्ध कुंभ मेला. This is 1974 or 75. कुंभ मेला प्रयागराज में प्रभुपाद जी गए थे. एक फिलोसोफर था, उसको अब डिवोटिस क्या करते थे, अमेरिकन एंड यूरोपियन डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, वो सब अलग अलग लोगों को लेके आते थे प्रभुपाद जी के पास और फिर डिबेट कराते थे, और प्रभुपाद जी उनको शास्त्रों के आधार पर परास्त कर देते थे एकदम. प्रभुपाद would defeat them badly. I mean, who can confront Srila Prabhupada? There is no question anybody can even try. There was one Mayavadi sannyasi who came to ISKCON Juhu and Shankaracharya Mutt of Bangalore, very well known, and he was very happy, and he commented two things. I liked it so much. He said that Srila Prabhupada is the best advocate on behalf of Krishna. Srila Prabhupada is the best advocate on behalf of Krishna. This is coming from an acharya of Sankara Mata. And then he said that whoever he may be in the entire world, for centuries together, but nobody can defeat Srila Prabhupada in the logic. Logic. If you hear Prabhupada's logic, it's amazing. So anyways, when Mayavadi came in, Prabhupada defeated him, and then he was still saying, no, I am God, I am God, I am God. Prabhupada defeated him on philosophy. He was still saying, no, I am God. Prabhupada says, no point discussing with him. And the devotees were very angry. He said, इसको तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा. तो प्लान बनाया उन्होंने. क्या किया, जब रात को सो गए सब, जो टॉयलेट्स होते हैं ना लॉक कर दिए और चाबी रख ली. And next morning, when this Mayavadi sannyasi, he got up, pressure आया, पेट में pressure आया, जाना है, इसलिए किसने लॉक किया है दरवाजा, खोलो. And the devotee said, he is the key. इधर चाबी है. जल्दी खोलो, जल्दी खोलो. He said, no, first you accept that I am not God. I said, no, I am God. If you can, we are God, then open the lock with your magic. Control your pressure. After some days he got frustrated. No, I am not God. Okay, I accept I am not God. And devotees opened it, and he finished his job and came out. Then he came out, and after taking buses, that was my Leela. Another incident, 1970, Srila Prabhupada was invited for Vedanta Sammelan in Amritsar. This is very well known. And many philosophers were sitting. Amongst one, naturally, Prabhupada is also, actually, it's not amongst them. Prabhupada is much beyond them. So it so happened that 3 रूम दिए गए थे भक्तों को रहने के लिए. एक रूम में प्रभुपाद जी थे, दूसरे रूम में माताएं थी, और तीसरे रूम में कुछ भक्त थे, और फिर भी 3 भक्त और एक्स्ट्रा थे, मतलब जगह बहुत कम थी, तो उन लोगों को बाहर सोना पड़ा, और एकदम चिलिंग कोल्ड था उस समय. So they were troubled, but next day the manager said, ठीक है, आप एक हॉल में सो जाइए. In a hall, many Mayavadi sannyasis were sleeping. The devotees said, we will not sleep with Mayavadis. But still ठीक है, we will sleep in the corner, at least our health will be better. नींद आएगी, health अच्छा रहेगा तो हम सेवा कर पाएंगे अच्छे से. एक कॉर्नर में सो गए 3 भक्त. तो this devotee said that एक रात को एक मायावादी आया, and then उसके ब्लैंकेट खोल के पूछा कि I am God and you are also God. रात को 10 बजे. And this devotee said, we are not God. We are sample of God. We have quality of God, but not the quantity. And this Mayavadi says, just like spark and the fire is same. We and God are same. Spark and the fire. Then the devotee said that
The spark has the quality of fire, but not the quantity. You cannot cook a meal with a spark. And this person was confused a little bit. Then he pulled out another. He took out his blanket and he pulled one thread. This is just this thread and the blanket are same. And this devotee got an idea. Krishna inspired him. You read that? You read customer review? You take out the thread. This is just see. The Maya says this thread and blanket is same. And this devotee, Krishna inspired him. His name is Giriraj Maharaj. He is mentioning this. So he took the blanket. Okay, if the thread and the blanket is same, then blanket should the thread also should protect you from cold, equal to the thread and blanket. उसको लेके तकिया बना दिया और सो गए. वो अपने ईगो में गया वो. 2 घंटे ठंडी में हालत खराब हुई. Then he came back. He says, thread and the blanket is not same. You have proven your point. We are not gods. So I bow down before you. And then Maharaj said that his own Giriraj Maharaj says that actually don't bow down in front of me. Bow down to Srila Prabhupada who has taught us everything. And the next morning he went to Srila Prabhupada and got immediate. And they paid Dandas Pranam to Srila Prabhupada. He says, I surrender on to you. So why we were coming to the point that people think that it is connection to this shloka. People think that I am God, but actually that's not the fact. After that, Prabhupada was offered Mahaprasad of the deity. And Prabhupada just said that philosophers, impersonal philosophers and Mayavadis, they will keep speculating for lifetimes together. And devotees of Krishna will just eat prasad and dance in Kirtan and go back to Godhead. Just in one lifetime. That's mercy of Srila Prabhupada. He has given us a so easy process. Things are made so easy. Who could imagine? हम में से किसी ने कल्पना की थी 1 साल पहले कि हम तिलक लगा के या 2 साल पहले या 5 साल पहले कि हम तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के सैटरडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock कीर्तन में बैठे होंगे और भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे. किसी ने कल्पना की थी 1 साल पहले? किसी ने नहीं. But I mean, spirituality was meant for those जो हिमालय में जाके ठंड में रहने को तैयार है, उनके लिए it was meant. And Prabhupada has made it so easy and accessible for everybody. Anybody can do it. Even a small child can do it. Small child can do it. Earlier, पहले conception था कि ठीक है 50-60 वर्ष की उम्र के बाद आपको जाना है. Now even small child can do this. So that's greatness of Srila Prabhupada. He has made it so easy and accessible for everybody. So the point is, as it is mentioned, Prabhupada says in the purport that our constitutional position is that we are servants of Krishna. We are parts and parcel of Krishna. And if you agree to this, then we will be very happy. But people don't agree to this. They think that, okay, we are also God, or we can control things. Having forgotten God, we think that I'm the controller, I can control everything. That's when we invite the misery in life. But if you just surrender to Krishna, it's so easy process. It doesn't take so much efforts. Just we are approaching this momentous occasion of Pranapratishtha of Sri Ramachandra. And that, it reminds me that Lord Ram once, there was this incident, right? When Vibhishan left the army and came to Lord Ram. He left the Lanka and then came to Lord Ram. And then everybody was suspecting that he is from the enemy's party. My dear Lord, just give us permission, we will go to the air and finish him off there. We'll not allow him to land also. And then Lord Ram was looking at everybody. Then he looked at Hanumanji. Hanumanji, what do you say? And Hanumanji says that we should accept him. We should at least let him come and hear what he has to say. So then Vibhishan is approaching Lord Ram. Lord Ramachandra, so the ocean of mercy, he addresses Vibhishan as, hey Lankesh. Lankesh means the king of Lanka. Signifying that he has already killed Ravana and then he has coronated Vibhishan as king. Lankesh means the king of Lanka. But actually the king of Lanka is still living. But he is signifying that in future, very soon, I will kill Ravana and coronate you as the king of Lanka, Vibhishan. So it was confusing. Devotees were asking. And then somebody asked that, my dear Lord, you have given Lanka to Vibhishan. Now what if Ravana comes and surrenders onto you? लंका तो आपने दे दी है विभीषण को.
If Ravan comes and surrenders onto you, तो आप क्या करोगे? Then Lord Ram says, yes, I will give Ayodhya to him, and I will serve both of them. And there he says the nice shloka. Yes, yes, yes. Let's repeat this. Say, Prabhu, will everybody repeat? जितना याद हो. सकृदेव प्रपूर्णो यम इति मत्वा च याच्यते अभयं सर्वदा तस्मै एतत् व्रतम मम. Lord takes that pratigya that day. ये मेरी प्रतिज्ञा है. This is my pratigya I take. Anybody who comes and just says once, my dear Lord, I am yours. सकृत एव प्रपन्नमीय इति मत्वा च याच्यते. He just says this. भगवान के सामने एक बार जाके बोल दो भगवान मैं आपका हूँ. Please repeat after me. हे भगवान, हे श्री रामचंद्र, मैं आपका हूँ. And so easy. Lord will protect him. Lord will protect him. That benevolent is Lord Ramachandra, Lord Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's very easy. कुछ बहुत कुछ एकदम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये रिएजेंट, टेम्परेचर इतना सेट करना है, कैटलिस्ट, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है. आप फिजिक्स में जाओ, लेबोरेटरी में जाओ या फिर कंपनी में जाओ, वो वॉल्व चालू करना है, बंद करना है, मीटर मॉनिटर करना है, या फिर आप कोडिंग में है तो कोडिंग में माथा पेची करना है, कुछ कोड लगाना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. माला लेके बैठो और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो. सो सिंपल. Anybody can do. Even a small child can do. But we just do this with a good devotion. Krishna will protect us in all the situations. And the result is, as we are discussing philosophically, जो हम बड़े-बड़े concepts यहाँ discuss कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता easily. The senses are made up of modes of nature. The sense object is also made up of modes of nature. Interaction between the senses and sense object is also happening because of modes of nature. It's quite tough to understand for a small child. But one just does bhakti, automatically the attraction for matter will go away. Attraction for matter, because Krishna says in Bhagavad Gita, Shriya vinivartante nirahara sudehina sarvajam rasopyasya param drishtva nivartate. Krishna says that Vishaya vinivartante niraharasya dehinah. Even if somebody gives up the activities of sense gratification, sense objects को दूर कर दिया, पर फिर भी the rasa, the taste for sense gratification, tendency for sense gratification is still in the heart. It's like the seed is there, and as soon as the rains start pouring, the creepers, plants, grass starts growing. Similarly, we might have given up sense gratification activity, but then rasa is there in the heart. उसको जैसे ही there is watering, जैसे पानी डाला तुरंत ये सब वासनाएं बाहर आती हैं. So रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. How that can be eliminated? That can be eliminated by param drishtva, by higher taste. How many of you have come to yatra? Yatra में कौन कौन आए हैं? Okay, quite many of you. ऋषिकेश में कौन कौन आया था? Okay, ऋषिकेश में आए थे. वृंदावन, तलासरी, डांसिंग कीर्तन, सबने पार्टिसिपेट किया डांसिंग कीर्तन. आपने नहीं किया डांसिंग कीर्तन? अच्छा, डांसिंग कीर्तन नहीं किया. Okay. So during all these things, whether it may be kirtan in Rishikesh or kirtan in Talasari or Mangalarti ISKCON, Bhivandi or Shuhu, dancing kirtan here, do you feel any attraction to sense pleasure? We are not liberated, we are not pure devotees, but for the time being, for those 5 minutes or 10 minutes, at least एक क्षण तो वो feeling आता है. There is nothing in the world. आता है कि नहीं आता है? कुछ नहीं रखा है दुनिया में, कुछ नहीं रखा, और लिटरली कुछ नहीं रखा है. और बस हम मान के हम अपने आप को कन्विंस करके चलते हैं कि हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. As remember in this example, material sense gratification. Not only it is temporary. Prabhupada writes in one line here. What is that? He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness because he understands that we are parts and parcel of Krishna. We are supposed to serve Krishna. So he engages in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. Naturally, when we engage in bhakti, naturally we give up these material activities. Naturally unattached. Because they are temporary and circumstantial. Circumstantial, परिस्थिति के अनुसार वो आएंगी और परिस्थिति के अनुसार खत्म भी हो जाएंगी ये चीजें.
and temporary, very temporary. So I was remembering as when I was coming in the cab and I was reading Bhagavad, I was trying to prepare something, and it occurred to my mind that मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था गांव में तो आज कार में बैठने को मिलेगा, आज कार में बैठने को मिलेगा. मैं मुंबई कार रिक्शा आई मीन आई वाज इन विलेज तो आज सिटी में जाने को मिलेगा, गाड़ी में एनीथिंग मूविंग गाड़ी में बैठने को मिलेगा, रिक्शा बाइक और व्हाटएवर राइड मिलेगा आज. Now it's so common, rickshaw, car or bike, it's so common. Now it's frustrating. Traffic में अटक गए. The other day we came from हम भिवंडी से मुंबई जा रहे थे जुहू मंदिर. Almost 2.5 घंटे लगे हमें पहुंचने में. So frustrating. The same thing which gives us pleasure at one point, at another point of time, it gives us frustration. So yehi samsparshra bhoga dukhayone evde adi antavantah kamteya nateshu ramateva. But when somebody engages in bhakti, जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये चीजें एकदम तुच्छ लगने लगती है. कुछ नहीं है इन चीजों में, कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है. एटलीस्ट एक क्षण के लिए तो हमें वो रियलाइजेशन आता है, भले ही उसके बाद कुछ और रियलाइजेशन आता है. बाहर गए गेट के बाहर कुछ और दिखता है. बट देन फॉर मोमेंट द पॉइंट इज उसको परमानेंट कैसे रखना है. भगवान की सेवा में ही हमेशा अपने आप को लगाए रखो तो रियलाइजेशन हमेशा के लिए रहेगा. गंदी चीजें हम अट्रैक्ट नहीं होंगे. So that is required. We engage ourselves. Otherwise, material things give us anxiety and frustration. There's nothing in the happiness, material happiness. So there's a nice look at Srimad Bhagavatam. I was going through this. This is from first canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, text 18. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अनन्त अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in due course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. इसका मतलब ये है कि those who are intelligent, जिसके दिमाग में कुछ बुद्धि भरी है, जो अंडरस्टूड क्या नहीं भरा है, कचरा नहीं भरा है, अगर बुद्धि भरी है, उस व्यक्ति को ऐसे गोल के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद भी, भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा. जो मटेरियल हैप्पीनेस है, मटेरियल प्लेजर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज अवेलेबल इवन टू डॉग्स एंड कैट्स. वो कुत्ते और बिल्ली के लिए भी अवेलेबल है, उपलब्ध है. पर हमें मनुष्य जीवन में रहकर ऐसे कुछ उपलब्धि के लिए प्रयास करना चाहिए जो पूरे विश्व में घूमकर भी मटेरियल नहीं प्राप्त होगा. जैसे कि मटेरियल हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, जैसे कि मटेरियल मिजरीज भी ऑटोमेटिक आ जाती है विदाउट एनी इन्विटेशन. कोई किसी को ऐसे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिनों से हॉस्पिटल लेंगे, बहुत दिनों से फीवर नहीं आया, और फिर भी फीवर आ जाता है. करेक्ट, सबका अनुभव है. कोई इन्विटेशन नहीं देता कि भगवान को प्रार्थना थोड़ा बहुत दिनों से फीवर नहीं आया, फीवर आ जाए, बहुत दिनों से पेट दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा पेट दर्द हो जाए. विदाउट इन्विटेशन एंड विदाउट एफर्ट, मेहनत बिना मेहनत किए प्रॉब्लम्स और पेन्स आ जाते हैं जीवन में. इसी तरह खुशी भी जीवन में आ जाएगी ऑटोमेटिक, विदाउट एनी एफर्ट्स एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा एंडीवर. आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, मटेरियल हैप्पीनेस. It will just come. I was talking to one student at NIT Surat, or he was sharing, I mean every time during the placement times students in final year they get freaked out, वो परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा प्लेसमेंट. But I always tell them it is karma and you will thoroughly realize in final year, और पक्का रियलाइज होगा आपको फाइनल ईयर में. अभी क्या हुआ, एक स्टूडेंट था हमारा, ट्रैवलिंग संगीतन में कुछ वक्त आए थे, करेक्ट, उसमें से some of you came for traveling संगीतन this year or last year. तो he was thinking, ब्रो जी मैं ट्रैवलिंग संगीतन में आऊँ या ना आऊँ, मेरा भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है. मैं बोला जो आना है वो सामने से आएगा, सामने से दौड़ के आपके पास आएगा जो जॉब होगा. तो बोला ठीक है ब्रो जी मैं 1 वीक के लिए आता हूँ, बाकी 3 वीक प्रिपरेशन करूंगा.
तो एक वीक आया है, ही लाइक्ड इट, अच्छा लगा तो फिर कंटिन्यू किया। और उसके बाद क्या हुआ, ही वेंट टू राजकोट फॉर एन इंटरव्यू। अभी किसके लिए गया, अक्टूबर महीने में कोई फॉर्म भरा था, कोई अप्लाई किया था जॉब के लिए, एंड देन ही आल्सो फॉरगॉट, भूल गया। जनवरी जैसे ही संकीर्तन खत्म हुआ, जैसे ही वेंट टू कॉलेज, वो सामने से उन्होंने कॉल किया इंस्टीट्यूट ने कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, आर यू इंटरेस्टेड, ही सेड आई एम इंटरेस्टेड। उसने वो राजकोट गया, एंड देन ही वेंट एंड इंटरव्यू चालू हुआ। इंटरव्यू then he was asking, where are you from? He said, I am from Bihar, I stay in Surat, I stay in ISKCON. He said, I stay in ISKCON. And the interviewer got more interested and said, so what do you do, what is your schedule? And says, मैं इतने बजे 4 बजे उठता हूँ और मैं फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, उसके बाद भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही खाता हूँ। And then, so what do you read? You read Bhagavad Gita, you teach also Bhagavad Gita. And then he says, actually this was the educational institute. He says, we also have institute, we also give food without onion, garlic. So, and then this devotee said that, हमेशा, yeah, I can do this activity, मैं भगवान को भोग लगा दूंगा, फिर सबको प्रसाद खिलाएंगे, और एकादशी के दिन we can have some session on Bhagavad Gita. And this is all happening in the interview. There was absolutely no question of technical. No technical question. Absolutely no technical question. This devotee was selected only because he is connected to ISKCON. प्रभु जी, मैं लिटरली मैं पूरे इंटरव्यू में देख रहा था कैसे भगवान का हाथ है पूरा, मैंने कुछ नहीं किया। अक्टूबर में अप्लाई करके भूल गया मैं, सामने से कॉल आया और इंटरव्यू ये हुआ मेरा। एंड देन ये डिस्कशन चल रहा है कि आप गीता पढ़ाते हुए हो, क्या क्या है डिस्कशन। एंड देन इट डिड नॉट एंड देयर, खत्म नहीं हुआ वहां। ही केम बैक, देन ही वाज लाइक, प्रभु जी मेरा हो गया है। ही वाज हैप्पी, बहुत लंबा मैसेज लिखा, मैं बोला, मैंने बोला हरे कृष्णा, कृष्णा's desire ऐसे लिखा मैंने, कृष्णा's desire। प्रभु जी इतना पैकेज है, द प्रॉब्लम इज राजकोट में कोई यूथ सेंटर नहीं है जहाँ मेरे भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तो क्या करूँगा प्रभु जी। मैं बोला, सोचो, देखो अपॉर्चुनिटी मिला है भगवान के हाथ में, ये अगर भगवान ने किया है, भगवान और अच्छा भी करा सकते हैं, जहाँ आपको भगवान के भक्तों का एसोसिएशन मिल सकता है। बोला ठीक है, उसको आप होल्ड पे रखो, ऐसे सिटीज में ढूंढो जहाँ भगवान के भक्तों का संग मिलेगा आपको। ठीक है प्रभु जी। ही अप्लाइड सूरत में ही, उसको और 3 दिन के बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल गया। And same reason, the owner selected him just because he is spiritually interested. 4 दिन में 2 अपॉर्चुनिटीज। प्रभु जी लिटरली मैंने कुछ भी नहीं किया, भक्तों का संग भी अरेंज हो गया, पैकेज भी अच्छा खासा हो गया, सब कुछ। So the point is, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे मिजरीज, पीड़ा हमारे जीवन में आती है without any efforts and endeavor, similarly happiness also will come without any endeavor and efforts, material happiness. So we should not try extraneously for material happiness. हाँ, जितनी आवश्यकता है do the needful, but not उसके पीछे पड़ गए एकदम, बस कोडिंग में इतना दिमाग लगा दिया, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में इतना दिमाग लगा दिया कि जब करना ही भूल गए, जब के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, या भक्तों का एसोसिएशन हमने सेक्रीफाइस कर दिया। That is not human intelligence. इसका मतलब है कि इधर स्कल में कुछ और भरा है, बुद्धि और दिमाग नहीं भरा है, अगर हम ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। We should take decisions in a way that spiritually we advance further. Saturday morning, this is the association available. Yatras में association available है. We are going to Rishikesh in the month of February ending. Association available, spiritual upliftment is available. So we should take such decisions. Otherwise, material things will automatically happen. We may take material risk for Krishna, but भगवान उसको संभाल लेंगे। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो risks is necessary and most invited. That is called person in knowledge. और ऐसे व्यक्ति अगर जब भगवान की भक्ति में लगेगा, then he will be beyond the risk and beyond the interaction of modes of nature. तो automatically उसको realization आएगा. And then Prabhupada says the next shloka, will not discuss this. प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण अकृतविदो मंदान कृष्णविन्न विचालयेत्। जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं, बस भगवान की सीमा में लगाना चाहिए कैसे न कैसे। तो जैसे हम हरिनाम संकीर्तन के लिए जा रहे हैं, कल संध्या में हरिनाम संकीर्तन है, बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन है। तो जब आप हरिनाम संकीर्तन जाते हैं, ऐसे नहीं कि हर एक व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि ठीक है मैं आज से 16 माला चालू कर रहा हूँ, 1 माला चालू कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, करेक्ट।
हार्डली कोई भाग्यवान जीव होगा, पिछले जन्म से कंटिन्यू कर रहा होगा, तो अदरवाइज कोई बोलता नहीं। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं यही है, यही जीवन है, मेरा लाइफ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर वो भक्ति में छूटते नहीं है, समहाउ कुछ ना कुछ करके उनको एंगेज करो भक्ति में। आप देखेंगे हम जब स्पीकर लेके जाते हैं या भगवत गीता के बॉक्सेस हैं, कुछ लोग आके ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे सामने से, गीता का बॉक्स उठाने में मदद करेंगे या फिर ट्रॉली हटाने में मदद करेंगे, पानी लेके आएंगे। सो व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली? वो भगवान की डिवोशनल एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं, उनका डिवोशनल कोटा बढ़ रहा है। मतलब एक होता है अज्ञात स्वीकृति, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, पर अज्ञात स्वीकृति इकट्ठा कर रहे हैं, और जो वो जब थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा उसके बाद ही विल स्टार्ट देयर भक्ति, स्टार्ट इज भक्ति। तो हमें लोगों को ये स्वीकृति, अज्ञात स्वीकृति क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी, के अवसर देना है। Prabhupada said that our movement is established to create security for people, to give them security. तुम जाते हैं लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड दे, भले ही पता है कि ये गीता नहीं लेने वाला पक्का, पहले से पता है, पर फिर भी जाके एक बार हरे कृष्ण तो बोल देंगे, हम कार्ड तो दे देंगे, वो कान तो बंद नहीं करने वाला, नहीं नहीं सुनूंगा। उनकी स्वीकृति बढ़ गई, और जब एक लेवल पे आ जाएगी स्वीकृति तो भक्ति प्रारंभ कर देगा। प्रसाद दे दें हम, पक्का है गीता नहीं लेगा, फिर भी हाथ में तो दे एटलीस्ट एक बार, गीता को टच करेगा। मेरा जीवन, मुझे याद है मैं जब भक्ति में आया था, मेरा सबसे पहला संपर्क भक्ति में प्रभुपाद जी की पुस्तक को स्पर्श करना ये था। मैंने पढ़ी नहीं थी, जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो किसी ने मुझे, मेरे रिलेटिव ने ये पुस्तकें दी थी, छोटी छोटी 2 पुस्तकें दी थी। मैंने उसको बस लेके इंडेक्स में नहीं देखा, मैंने बस फर्स्ट पेज ऐसे पलट किया और फिर वापस दे दिया, आई डोंट हैव टाइम। बट आई रिमेंबर दैट वाज माय फर्स्ट टच विद इस्कॉन, प्रभुपाद बुक को टच किया था मैंने, पढ़ा नहीं था। सो कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के संपर्क में कोई भी आ जाएगा, उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। व्हेन यू गो फॉर हरि नाम, लोगों को उत्साह करो, उत्साह दो डांस करने के लिए, हमें एकदम मुंह लटका के नहीं जाना है। हरि नाम में आनंद से जाना है, लोगों को इन्वॉल्व करो हरि नाम संकीर्तन में। माइंड यू, आप विश्वास नहीं करोगे, पर ये जब ड्रेस देखते हैं ना, देखते हैं लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऐसे बस ऐसे ऐसे करो और आप ताली बजाओ, लोगों की आंखों में देख के लोग ताली बजाना प्रारंभ कर देंगे। आपने ऑब्जर्व किया है? आपको आवश्यक नहीं है कि उसको बस पकड़ के लेके आना है, एकदम 2 लोग को उठा के जंप कराना है। यू जस्ट स्टार्ट क्लैपिंग, उनकी ओर देख के आप खाली क्लैपिंग करो, ताली बजाओ, वो लोग ताली बजाना शुरू कर देंगे। और कोई ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा तो उसको लेके घुमाओ थोड़ा। लोग मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा, पिया हुआ तो कोई मिलेगा पक्का। हमें हर कीर्तन में अनुभव है, कोई ना कोई पिया हुआ मिल जाता है और वो बस डांस करेगा अच्छे से। आपको भी अनुभव है? आपको बता रहे थे लास्ट हरिनाम में मिला था कोई, तो कोई ना कोई तो मिलेगा। ये हरिनाम संकीर्तन का आनंद। तो भले ही लोग ऐसे एग्री नहीं करेंगे, बट देन उनको आप भगवान की डिवोशनल एक्टिविटीज में एंगेज करो। हरिनाम संकीर्तन में कोई आएगा, किसी को पूछ सकते, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं गीता कार्टन उठाने में, ठीक है? बहुत सारे बुक्स आपके हाथ में, आपको कोई और पुस्तक निकालनी है बैग में से, कैन यू होल्ड दिस, एक मिनट पकड़ो ना थोड़ा। उसको पता नहीं क्या कर रहा है, उसको लगा कि मैं बाबा जी को हेल्प कर रहा हूँ, बाबा जी एकदम दुबले पतले हैं, एकदम उतने पुस्तकें उठा नहीं सकते, मैं हेल्प करूंगा। नहीं, अनइंटेंशनली हमें वो मदद कर रहा है, भगवान की सेवा में एंगेज हो रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें उठा रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, बहुत बड़ी एक्टिविटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हेल्प कर रहा है। इट्स बिग थिंग, यू मे नॉट इमेजिन, इट्स बिग थिंग। उसकी भक्ति बढ़ रही है आगे। तो कैसे ना कैसे उनको एंगेज करना है। पुस्तक, कोई ट्रॉली, थोड़ा कोई पानी लेके आता है, encourage them। ऐसे नहीं कि नहीं 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 हमारे पास पैसे हैं, आपके पैसे से हम पानी नहीं लेंगे, एक्सेप्ट दैट। हमारी सेवा नहीं हो रही है, संकीर्तन में जो शरीर लगा है उसकी सेवा हो रही है। हमें यही सोचा कि ठीक है, मैं वो देखो मैं इतना साधु बन गया। अंदर क्या भरा हमें ही पता है। बट नो, संकीर्तन एक्टिविटी में जो रिसोर्स लग रहे हैं वो कोई अरेंज कर रहा है, तो उसके लिए उसकी भक्ति बढ़ेगी। कैसे ना कैसे लोगों को एंगेज करना है। तत्ववित्तु महाभागो, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना कि मंदिर चलो और 16 माला, एकदम माला पकड़ो बैठो, 4:30 को उठाएंगे आपको। आराम से। एंड हरिनाम संकीर्तन इज द प्रैक्टिकल वे टू रियलाइज ऑल दिस श्लोकास व्हिच वी आर डिस्कसिंग। अभी श्लोक डिस्कस कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, वी हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, मोड्स ऑफ नेचर, उससे हम अनासक्त रहना है, दूर रहना है, अनासक्त विषयान तारम उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम उच्यते। फिलोसॉफिकली यहाँ पर ये सब चीजें किताबी ज्ञान ही रह जाएगी जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे। खासकर प्रैक्टिकली हरिनाम संकीर्तन, जब लगते हैं हरिनाम संकीर्तन पुस्तक, ये सब श्लोक एकदम रियलाइज होते हैं हम,
और नेक्स्ट टाइम जब आप भगवद गीता पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा, अरे हाँ ये तो वही इंसिडेंट है, यही इंसिडेंट बोल रहे हैं भगवान इधर। भगवान बोलते हैं कि आई एम नॉट द डूअर, पिछले श्लोक में था आई एम नॉट द डूअर, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, एवरीथिंग इज डन बाय मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा। तो कैसे रियलाइज होगा? हम हैदराबाद, हम यहाँ भाग्यनगर में थे लास्ट मंथ, और हम हरिनाम संकीर्तन के लिए गए थे। तो जैसे कैसे चीजें होंगी, और वी आर नॉट द डूअर। एक भक्त खड़ा था ऐसे रोड पे और कुछ था, मोबाइल ऑपरेट कर रहा था, और मैं हरिनाम से मैं गा रहा था, एंड दिस उनके हाथ में गीता थी, पुस्तकें थी, तो कुछ मैसेज कुछ रिप्लाई कर रहा था कुछ था, और एक व्यक्ति आके बाजू में खड़ा हो गया। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये व्यक्ति आके खड़ा हो गया, बट ड्यूटी का कुछ अर्जेंट मैसेज था, तो उनको पता ही नहीं कुछ सामने खड़ा है। मैं बोला हितेश प्रभु सामने कोई खड़ा है, तो सामने आके बस गीता के लिए खड़ा है, गीता दिया, पैसा लिया, हो गया। इट्स सो इजी, सामने से लोग आए हैं, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद ट्रैफिक में रेड सिग्नल पे एक बस खड़ी हुई, बस में एक व्यक्ति बस ऐसे देख रहा था और ऐसे कर रहा था, तो मैंने बोला हितेश प्रभु जाओ उसको दिखाओ। उसने लिया तुरंत, बोला कितना है, कितना है, मैं इतने रुपए, तुरंत पैसे निकाल के दे दिए, गीता ले ली। So we are not the rulers. It's Krishna who inspires people. उसके बाद हरिनाम संकीर्तन में उनको बोला प्रभु थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, आपको अटेंशन रखना चाहिए, लोग आपके देख रहे हैं, सबको ऐसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि भले ही लोग ले नहीं, हम एटलीस्ट अटेंशन रखेंगे। और वैसे भी वी डोंट डू, कृष्ण इज द डूअर। जैसे प्रभु सही बात है, सबके एक एक दो गीता गए थे, उनके 6 गीता गए उस दिन, टफ टाइम था उस दिन। जैसे हाँ, मैंने बोला 2 तो मेरे सामने ही गए, बोला हाँ प्रभु जी, और एक व्यक्ति आया था बाइक पे और 3 गीता सामने से मांग के लेके गया। ऐसे सारे 6 गीता सामने से मांग के लिए थे उसने किसी। वी आर नॉट द डूअर्स, हमें तो जाके एक इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान के हाथ। और उसमें जो आनंद आया, और जिसने जिसने हरिनाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण में भाग लिया उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, दे कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। जब पुस्तक वितरण, जब एक पुस्तक किसी के हाथ में जाती है और जो आनंद आता है, करेक्ट, आई सी सम फेसेस ब्लैंक बिकॉज आपने अनुभव नहीं किया, आस्वादन नहीं किया है। So those who have not experienced and relished, go tomorrow evening and experience it. कल तो खुशी खुशी ले लेंगे लोग। बहुत बड़ा इवेंट है। Thank you so much. So this way we understand that we are not the doers, Krishna is the doer, and everything is orchestrated by Krishna through the material modes of nature। और वो हमें अनुभूति होगी जब हम भगवान की सेवा में लगे हैं प्रैक्टिकली, और हमें उस स्तर पर पहुंचना है जैसे कि कमल, ये श्लोक भी आएगा, पत्रम पुष्प एवं एवं वसा, जैसे कि एक कमल जल स्तर से ऊपर होता है, भले ही जल के अंदर है कमल, पर जल से कभी स्पर्श नहीं होता, क्योंकि कमल के पत्ते पर, on the leaf of the lotus flower there is a wax layer because of which अगर पानी का एक बूंद उसके ऊपर गिरता भी है, पानी का बिंदु सीधे सड़क के अंदर पानी में चला जाता है, आसक्त नहीं रहता। हम भी उसी अवस्था में जी सकते हैं, उसी चेतना में जी सकते हैं if we are engaged in bhakti। And there had been kings like King Kulashekar, such a great king, and he was devotee of Krishna। वो क्या करते थे, राज्य, अपना राज्य कैसे चलाते थे, बस एज मच नीडेड, अदरवाइज पूरा टाइम वो क्या करते थे, एक पंडित जी को रखा था, भक्त को रखा था, और वो पूरा दिन रामायण पढ़ते रहते थे, वो बस रामायण सुनते रहते थे, एंड वो इतने एब्जॉर्ब थे, एंड भगवान सब कुछ एंगेज मैनेज कर लेते थे, इतने एब्जॉर्ब रहते थे। एक दिन यूँ हुआ कि जब वो सेक्शन आया कि भगवान श्री रामचंद्र जंगल में थे और रावण आए और उनको माता सीता को लेके चले गए, अपहरण किया। जैसे इसने सुना तो एकदम गुस्सा हो गया, सिपाही चलो, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको ऑर्डर देके चलो अटैक, गावा बोल दो। क्या करें अभी संखी राजा ने ऑर्डर दिया, करना ही पड़ेगा। सब चले एकदम सेना लेके जा रहे हैं सब, और कुछ बुद्धिमान कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी बोलो आप तो थे, उन्होंने क्या किया, वो घोड़ा लेके आगे चले गए पहले ही, वो तो एकदम मूड में था, चलो माँ सीता को ये लेके गया है, जाएंगे समुद्र के पार। तो समुद्र में चलने लगा राजा किंग कुलशेखर, चलते चलते पानी में चले गए वो लोग। तो सिपाही सोच रहे थे, मंत्री सोच रहे क्या करेंगे, कमांडर इन चीफ सोच रहे क्या करेंगे, ये तो अपने भाव में है। बट 2 मंत्रियों के दिमाग में कुछ बुद्धि आई, तो वो लोग आगे चले गए थे और सामने की ओर से आए, महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमने सब पता लगा लिया है माता सीता कहाँ है, रावण को खत्म कर दिया है, भगवान श्री रामचंद्र खुश है, अब वापिस। वो शांत हो गया, ठीक है अब वापस।
से I mean it was literally like that. और उनके बिहार पे भगवान सब अरेंज करते थे. If we have that faith and belief that अगर मेरे जीवन की कोई भी आवश्यकता है भगवान अरेंज करेंगे. If we have that faith, Krishna will take care. भगवान श्री रामचंद्र will take care. प्रॉमिस करता है भगवान. प्रॉमिस करता है कि अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अगर कोई व्यक्ति मेरे चिंतन में लगा हुआ है, अनन्या चिंतयन्तु माम, मेरे मात्र चिंतन में और कोई चिंतन नहीं, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. उस व्यक्ति के पास जो भी है भक्त के पास उसको मैं रक्षा करता हूँ. इफ ही लैक्स एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग डेफिसिट, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ. भगवान प्रॉमिस करते हैं. भगवान की प्रॉमिस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल के चंगू मांगू पॉलिटिशियन भी इतना विश्वास कर लेते हैं. वो बोलते हैं कि चलो ये मुझे वोट दे दो, मैं ये कर दूंगा, सड़क बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके ऊपर विश्वास करके वोट दे देते हैं. तो भगवान जब बोल रहे हैं, भगवान के वर्ड्स पे तो विश्वास करके वोट देना चाहिए. हाँ, वी एग्री विद व्हाट कृष्ण सेज. भगवान कर, और अगर फेथ है तो कृष्ण करेंगे. दैट इज कॉल्ड रियल गैम्बलिंग. गैम्बलिंग को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. रिस्क, आई हर्ड फ्रॉम Prabhupada. Prabhupada says this. Prabhupada says gambling also can be engaged in Krishna's service. Take a risk. Gambling मतलब क्या है? रिस्क है ना. इन्वेस्ट करेंगे, रिजल्ट रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं. तो जीवन लगाओ दांव तो भगवान की सेवा में, देखते हैं क्या होगा. रिस्क है, होगा, भगवान करेंगे. थैंक यू सो मच. सो इसी तरह में राजा कुलशेखर, और fortunately we have such arrangement. Krishna has arranged. We have current prime minister who is in the lines of Shastras and Sanatana Dharma. Should take this opportunity, take up bhakti ourselves very seriously, and propagate to more and more people. There's a good wave going on right now. So connect more people to Krishna. Thank you so much. Is it okay, Krishna? Any questions? Is it okay, Krishna? Harsh. Sentiments and philosophy should be aligned, right? So the bhakti should be not only sentimental, but it should be backed by philosophy. Yes. So how should we actually know about it, where there is sentiments and where there is actually we are understanding the philosophy and we are following what philosophy says? We should always walk on the philosophy. If we properly walk on the basis of philosophy, attached to philosophy, following the methodology given in the Shastras, with a proper mood, then I am doing this because Krishna wants this. What I am doing, what is mentioned in Gita, what Acharya Srila Prabhupada has given, I am doing this as a surrender, as a seva to them, to follow their instruction. If we follow the methodology rightly, in the right mood, under the guidance of devotees, bhava and sentiment will automatically come. It will automatically come. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that philosophy without religion is mental speculation, and religion without philosophy is sentimentalism. So we are neither of them. We are combination of both. That emotion will come. Actually, that is the nature of bhakti. अगर आप methodically proper करेंगे ना, वो भाव उद्भव होना ही है. It will come. If I am approaching bhakti with the proper mood, it will happen automatically. एक दिन ऐसे हुआ कि I am such an atheist. I look for logic everywhere. How come tears are coming from my eyes? All of a sudden, that transformation will happen. How come मैं इन चीजों से touch हो रहा हूँ? Because bhakti has that power. It's very powerful. It's infusing. Bhakti is very infusing. किसी भी व्यक्ति को आप लेके जाओ डांसिंग कीर्तन में, कभी देयर इज स्ट्रॉन्ग डांसिंग कीर्तन गोइंग ऑन, कुछ तो लगे, कुछ तो हो रहा है. However atheist he may be. So the philosophy, if followed properly in the right mood, automatically will give rise to affection, emotions, not sentiments. We should have sentiments, but we should not be sentimental. Sentiment के भाव के पीछे ही बह जाए हैं. वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत. Knowledge also will arise in the heart. Vairagya also will arise in the heart if you do bhakti properly. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita.
प्रयोजिता मीन्स एक्सपेरिमेंटेड. प्रयोगशाला याद है स्कूल में, स्कूल में लैबोरेटरी के ऊपर लिखा रहता है प्रयोगशाला, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रयोग होता है. सो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तो प्रयोग करेंगे भक्ति का. उसके बाद रिजल्ट विल बी कृष्ण प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अगेन. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, इट इज प्रैक्टिकली रियलाइज्ड, इट इज नॉट sentiments. And if Americans and Europeans who were too hedonistic and logicians, if they could get tears in their eyes or when touched by the power of God, why not we? But prayojita, philosophical experiment. Philosophy, Krishna says, Anyas chintayantu mam yajana prayupasa. Think of me alone and nobody else. I'll take care of everything. Let's try. Let's gamble. जीवन का लगाओ भगवान की सेवा में, देखते हैं भगवान will protect. Krishna will protect. Since last how many we are almost now 20 to 30 years of age, 20 से 30 वर्ष की आयु में है सब यहाँ रेंज में. पिछले आपकी जितने भी उम्र है, कभी भी एक दिन ऐसा गया है कि जिससे पैसा नहीं था और आप भूखे सो गए, या खाना नहीं था और भूखे सो गए, पैसा भी था खाना नहीं मिला और भूखे सो गए, हुआ है कभी? आपकी गलती होगी, आप लेट पहुंचे या व्हाटएवर, दैट इज प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम. बट सिचुएशन ऐसे नहीं कि भगवान ने नहीं पहुंचाया, ऐसे नहीं होगा. Without we take birth, Krishna has arranged milk in the mother's body before we take birth. So why not right now Krishna will arrange? When we are especially working for him, he will arrange it. Should have that faith. होगा बस. ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं. I mean, practical, very small example. I can get so many examples. Narsi Mehta was a great devotee in Chinagar, Gujarat. His Holiness Gaur Maharaj tells his story how Narsi Mehta was protected by Krishna. I'll give you a very practical example because हम जो example देखते हैं ना उसके हम ऊपर हमें ज़्यादा श्रद्धा आती है. This is going online or recording? ठीक है, class is officially over, so we'll end here. श्रीमद् भगवद गीता की जय.